Okay, we were talking about the stem and leaf plot. Stem and leaf plot is basically a plot for the quantitative variables, and but this is for the data type which is small in size. The stem and leaf plot and another variation to it that is labeled as the dot plot are mainly the plot structure or graphical structure for small size quantitative variables where we play with the actual data. What we do in the stem and leaf plot is that we split the data at hand into a digit-wise structure. We hold the rightmost digit as leaf, and all other part of the observation or the numerical data is being considered or used to construct the stem for it. So the stem and leaf plot give us a view of the actual data points in graphical form, and we can have a look about the five main characteristics from the stem and leaf plot. That is, we can identify its representative value, its spread. We can have a look at its at any gaps in the data set. We can have a look at the shape of the data set, and we can look at any peaks or the location of peaks where the maximum data lies, and in case of any outlying observation, that is also visible in the stem and leaf plot. But what mainly or important thing is about stem and leaf plot is that it is suitable for small data set, since we are playing with the actual data observations directly. Now, how to draw them? Let's have a look at them. The stepwise procedure is to split the data digit wise, such that we construct the stem of from the data points by holding the rightmost digit apart, and all other digits from the leftmost corner to the second last digit are considered to be as the stem. That is, write the stem from smallest to largest in the vertical column to the left of the vertical line, and then we write a leaf in the horizontal or row wise structure from right to the vertical rule. We can arrange them in the ascending order. Let's have a look so that we can get the idea. Consider this data as the data to be used or plotted for the stem and leaf chart. Let me annotate again. For stem and leaf plot, what we would be doing is we would be considering the observations. Here we have two-digit observations. So for these two-digit observation, the rightmost digit would be considered for every observation. The rightmost digit is to be considered as leaf, while the other all digits, here we have, since only two-digit observation, so the left digit would be considered as stem. Now the structure is that we plot the stem only once. That is, let's look have the smallest value. We have the smallest value as low as 2 over here, and the largest value is about 52, if I'm not wrong. No, 57. So the stem can be constructed as 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Then we have a line over here, and let's plot them. Now 25 would have a 5 over here. Then we have 31. 1 would be plotted here. Then we have 20. Let's plot a 0 over here. Then we have 32. Then we have 13 over here. Then we have 14. Then we have 43. Then we have 2. Then we have 57, 23, 36, 32, then 33, then 32, then 44, then 32 again. Then we have 52, 44, 51, and 45.
Now the appropriate stem and leaf chart would be that we would be having 0, 1, 2, 3, 4 and 5 as a stem, and the vertical digits would be reported as 2, 3, 4. Then we have 0, 3 and 5. Then we have 1, 2 is twice, then we have 3 for, sorry, 2 is 3 times, and we have 3 as twice, then we have a 6 over here. Then for 4 as a stem, we have 3, 4, 4 and 5. Then we have 1, 2 and 7. So this is the stem and leaf chart. Let's have a look at it through slides as well. So the stem and leaf and some properties of stem and leaf chart that can be seen over here. मैम रिपीट कर देंगे क्योंकि ये कुछ समझ नहीं आई है स्टेम हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया लीफ किस तरह मैं आइडेंटिफाई दोबारा किया बता काइंडली देती हूँ रिपीट हमारे पास मैं दोबारा बता देती हूँ फॉर स्टेम एंड लीफ चार्ट व्हाट वी डू इज वी स्प्लिट ईच data point into two parts. One part is considered to be the stem and the other part is to be considered as the leaf. This is to be done with each and every data point. Here we have two digit data point. The rule is that the rightmost digit of the data point is to be considered as the leaf, while all other digits are to be considered as a part of stem. We would be identifying the numbers. Look at this case. It would be more clear from this data set. आप अगर अपनी आसानी के लिए इसको arrange कर लें, even with the raw data you can do it. But here what we did is we have the data set arranged in ascending order form. Then what we do is we just split the cases in form of the number digit points के हमारे पास जो है वो 02 वाले कितने थे, 10 की रेंज में कितने थे, 10 से 20 तक के, 20 से 30 की रेंज में कितने थे, 30 से 40 की रेंज में और 40 से 50 की रेंज में कितने थे. ठीक है, अब इन डाटा पॉइंट्स को हमने स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने का तरीकाकार क्या है, जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज दी लीफ पार्ट, और जो बाकी सारे के सारे डिजिट होते हैं हर नंबर में से उसको हम कंसिडर करते हैं एज लीफ पार्ट. यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर है. 2 डिजिट में इसका मतलब है जो राइट मोस्ट डिजिट है यानी जो यूनिट डिजिट कहलाता है, अगर मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो आप लोग, तो हमारे पास दैट इज बीइंग मार्क्ड एज दी लीफ पार्ट, और जो 10 डिजिट होगा उसको हम मार्क कर देते हैं एज दी स्टेम पार्ट. लेकिन रूल क्या है कि हमारे पास जो स्टेम है वो सिर्फ एक दफा रिपीट होता है, और लीफ जो है उसको हम हर ऑब्जर्वेशन के लिए यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. सो लाइक अ ट्री, हमारे पास ब्रांच पर एक जैसे पत्ते बहुत सारे हो सकते हैं ना. सो डाटा पॉइंट जितनी दफा रिपीट हो रहा होगा हम उसको उतनी ही पार्ट पे रिपीट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव टू, लुक हियर नाउ, हमारे पास लीडिंग डिजिट जो था वो स्टेम बन गया, और जो ट्रेलिंग डिजिट था या जो यूनिट डिजिट था वो 2 हमारे पास लीफ बन गया. ठीक, देन क्या थे, 13 एंड 14 थे, तो हमने लिखा 1 को एज स्टेम और 3 एंड 4 आर बीइंग रिटन एज द लीफ. नाउ लुक अगेन, वी हैव 20, 23, 25 एज द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द रेंज ऑफ 20. तो हमारे पास जो थर्ड लीफ बन गया वो क्या आ गया, थर्ड स्टेम आ गया वो 2 आ गया. And from the for the stem 2 we have leaves at as 0, 3 and 5. Is it clear? Look again, for the range of 30 हमारे पास जो है वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, 31, 32 is repeated 4 times, then we have 33 and 36. now in front of, अब जो हमारा फोर्थ स्टेम का पार्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2 हो गया था, 3 would be the next stem part. Now for 3 we will be having the leaves. Leaves are marked by the rightmost digit, that is 1, 2, 2, 2, 2, 4 times, then 3 and 6. Here we have the leaves or the trailing digit as the leaves. Similarly, you can identify for 4, that is 43, 44, 44 and 45. These are the part for stem number. Next जो है हमारे पास जो फिफ्थ स्टेम पार्ट आ रहा है, that is नंबर 4 के लिए. जो 40th वाला स्टेम था उसके सामने हमारे पास क्या आ गया, 4 is the stem and 3, 4, 4, 5 are the trailing digits or the leaf for this stem part. Now finally the
last part of the stem, that is 50. So उसके सामने हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 and 7. Look here. Am I clear now to everyone how we have formed the stem and leaf chart? This can be done for a 3-digit मैम number. This can be done for a मैम ये जो 3-digit number. जी उमैया, उमैया ये बोलती जो है. जी 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 ये जो स्टेम है ये फर्स्ट डिजिट होता है जो हमने लेना होता है कॉमन। यस, मैंने आपको बताया कि हमारे पास रूल ये है कि आप राइट मोस्ट डिजिट को छोड़ देते हैं एज लीव. बाकी ठीक जितने है। डिजिट्स आ रहे हैं, अगर आपका 2-digit नंबर है तो ऑब्वियसली सिर्फ एक डिजिट हो जाएगा जो आपके लेफ्ट में आ रहे हैं. अगर आपका फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन थी 3 डिजिट में, यानी हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में हंड्रेड्स के साथ थी ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होंगे वो बन जाएंगे स्टेम. So the rule of ठीक construction है। of leaf is that we identify the rightmost digit or the trailing digit as leaf, while all other digits are generally being marked as a stem. ओके ठीक है। For example, just for making you understand, if we have observations like, let's say, we have 100, 102, 11, 113. Sorry, not writing. I don't know what's the trouble with it. 127, 132, 132, etc. So what we would be having, we would be having these stems at 10, 11, 12, 13, let's say 14, and then we would be having a 0 as a stem, 2 here, 113 here, 127, 132, 132, and so on. जो भी numbers थे हम उनको plot कर देते हैं. Is it clear how to draw a stem and leaf chart now? But जी one मैम। can ask about in case of decimal digit numbers, what we do is we use the prior to decimal digit part as a stem, and the part trailing to or after the decimal as the leaf, but you have to identify or add the key for it in that case. मैम इससे इस प्लॉट से हमें कोई ट्रेंड तो नहीं समझ आ रहा क्योंकि ट्रेंड क्या है डेटा सेट का दोबारा ऑब्जर्वेशंस दोबारा का। पूछे. अभी मैं बता देती हूँ, एक सेकंड में बता देती हूँ. लुक हेयर, फॉर दिस केस वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन सी हेयर व्हाट थिंग्स. हमने कहा कि हम जो है 5 थिंग्स आइडेंटिफाई करते हैं. क्या 5 थिंग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेम एंड लीफ चार्ट? वी यूज देम टू आइडेंटिफाई द typical or representative value. That is, we can identify or note what if some value is repeated most of the time, or a range of values are being repeated most of the time, or are repeated more frequently, then that can be identified. We can identify what is the spread of the observations, or spread of the repeating observations. Then we can identify if there are any gaps in the data set. We can see about the extent of symmetry or the shape of the data. We can identify the number and peaks of the number and location of the peaks, and in case of outlying observations. For example, let's have a look for this. For this case structure, I can note or I can identify that the most repeated value here is this 2. That is 32 is the most repeated value I can identify by looking at this graph. Or this is the third row is the fourth row with the stem. 3 is the structure where the most repeated or representative value is available here. Similarly, I can see the spread of the observation along for the most frequent observation is spread along a single observation, that is 32. And for about the gaps, there are no gaps in the data set. I can see about the graph of, or if I can draw just a, so I can see somewhat the data is symmetric over here for this particular situation. And lastly, there are no outlying observations. So the data here is telling me or identifying the shape or structure of the data. So I can note all 5 points or all 5 parts over here. Let's look at some more graph of this type. For this case of chart type, where we are having the data set for some short-term investments. 40 short-term investments are to be plotted using the stem and leaf chart. What we did is we first noted off the stem
One thing to be noted is that stems are always in a continuous form, यानी अगर हमने for example 10 digits में identify किया है कि हमारे पास lowest value जो है 36 से आ रही थी और यहाँ इस केस में 99 आ रही थी, तो अब जब हम stem plot करेंगे we would be having them in ascending order without leaving any digit of the stem. For example सिर्फ समझा रही हूँ कि अगर हमारे पास 60 की कोई ऑब्जर्वेशन ना होती, यानी 60 की रेंज में कोई ऑब्जर्वेशन ना होती, तो इन दैट केस व्हाट वी वुड बी डूइंग इज कि हम उसको यहाँ से स्किप नहीं कर रहे होते, हम स्टिल 6 वाला स्टेम जो है या 60 वाला स्टेम लिख देते, लेकिन उसके सामने कोई वैल्यूज नहीं आती, दैट वुड बी द गैप लाइन, ठीक है, और फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते थे. सो स्टेम आज तक कोई दरख्त दरमियान में से गायब या कटा हुआ तो नहीं होता, वो जितना ग्रो कर रहा है वो इकट्ठा ही ग्रो करता है. देयरफॉर फॉर द सेम अंडरस्टैंडिंग हमारे पास ये एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्म में लीड करता है, यानी फ्रॉम द लोएस्ट स्टेम टू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम ये कंटिन्यूड लेकर चल रहा होता है. और अगर बीच में कोई डिजिट्स किसी के मिसिंग होंगे तो हम उसको एज अ गैप रो आइडेंटिफाई करते रहते हैं, लेकिन हम रो को लेबल जरूर करते हैं, यानी स्टेम को हम मिस नहीं करते बेशक उसमें कोई लीफ ना आ रहे हो, ठीक है. तो और उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहले इसको रफ ड्रॉ कर लिया एक दफा जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन आ रही थी विदाउट इवन अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर. सो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज मेनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली. Then what we did is, for the 2-digit case, we split the 10th digit and identify this 10th digit or the left digit as the stem. So 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s and 90s के जो अंदर जो observations थी that are to be labeled as the stem. While the exact values 38 में 8 को हमने plot कर दिया, that is the rightmost digit as the leaf part. From 36 we plotted or labeled 6 over here in the leaf part. And for 39, 9 is being written in front of the stem 3. Then for 47 we have 7 written as a leaf part of the stem where 4 is reported. Similarly 57, 51, 56, 53, 55, 51, 50 and 55 is being reported in form of 71635 as the leaves of the stem where 5 is written. Am I clear to everyone now? And similarly, the whole data is being plotted once. In the A part or the in A stem and leaf chart, we just used the raw data and constructed the stem and leaf chart as the observations appear. Then we draw it appropriately by arranging the leaves in ascending order, that is from lowest to highest row-wise structure for every successive stem alone. Nothing is being arranged across the stems. All observations falling in a single or corresponding to a single stem are rearranged in ascending order only. And so we have a well organized stem and leaf chart as the figure B. And then from here we can see all those 4 or 5 points that I've noted, that we can identify the most representative value as the stem 6 corresponding here seems to have the single peak observation or the most repeated observations or the most observations. Here the spread is, instead of having all observations repeated many times, only 64 is repeated twice, while we can see that 70 was unlike the observation that was the most typical value for this data set, although the remaining observations falling in the stem 70 are not more typical. So the typical observation for this stem and leaf chart is 70, that was repeated for 3 times, and the spread of this typical value is only over one observation, that is 70. No more observations were repeated so many times across the data set. Next question was here, the next identification was the presence of any gap in the data. We can see that there is no gap across the data set. Then was the identification of about the symmetry of the distribution and number and peak of the number and location of the peak, where we can see that approximately our data is somewhat symmetric, but still we can see that the right tail is more heavy as compared to the left tail or the lower tail of the data set. So it is not exactly very symmetric data, but the right tail is not equal to or not similar to the left tail of the data set. So we cannot say that this data is too symmetric or symmetric data set cannot be concluded. Then what we see is, we can see that there is only one peak across this one, that is at the stem number 6 we have the highest number of observations falling or corresponding to the stem number 6 one, or the row number 1, 2, 3, 4th row. Ma'am,
ठीक, यस। Ma'am, why did we make two charts for stem and leaf in this टू नहीं बनाया particular बेटा, slide? टू नहीं बनाया, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, टू नहीं बनाया। पहले मैंने रॉ डेटा से रफली स्केच कर लिया, फिर उसी को Okay, जाके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, मैं दोबारा से इसका ठीक है मैम। एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसको हमने सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट बी है वो चार्ट ए का दोबारा रीमेक है, सिर्फ और सिर्फ उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, नथिंग मोर देन इन देयर। ठीक, एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ कि स्टेम एंड लीफ चार्ट कैसे मैम बना? तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है मैम, अगर हाँ, हमने ताकि एक्चुअली आपको अटेम्प्ट करना है? समझ में आ जाता है कि आपके पास मोस्ट लोकेटेड ऑब्जर्वेशन, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके पास जो पीक बन रहा है वो अप्रोप्रिएट है, उसके लिए उसको लिखना जरूरी है। अदरवाइज वन कैन राइट मैम। इवन हैव अ लुक कि हमारे पास जो है वो उस तरह से फॉल कर रहा हो, तो हम रफ रॉ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन एज अ प्रोटोकॉल टू इट वी रीअरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब एक चीज और थोड़ा सा इसी की मैडम हो ये जाता है। मैम, वन थिंग, क्वांटिटेटिव एक क्वेश्चन है और मैम। स्मॉल। कैसे मैडम ये आपकी आवाज समझ क्वांटिटेटिव और नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है अब? हेलो। जी जी, कैसे बोलिए। मैम, मैं कह रहा था जो आप पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू एडिशन है, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, उसमें जो स्प्रेड है, उसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? अच्छा, मैं इस वाले चार्ट पे बताती हूँ। इस वाले चार्ट में देखिए, ये वही डाटा सेट है कि एक और एक डाटा सेट है हमारे पास विद 20 ऑब्जर्वेशंस विद शोइंग द कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल शो हो रहा है, जिसके लिए वी हैव ड्रॉन अ स्टेम एंड लीफ चार्ट। जस्ट लुक एट दी फिगर नंबर ए राइट नाउ, अभी बी पे नहीं जाना, अभी कुछ और चीज बताने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। जब हम फिगर नंबर ए में देख रहे हैं तो हमने क्या चीज नोट की, सबसे पहले हमने कहा इसमें से देख लेते हैं मोस्ट टिपिकल वैल्यू क्या है। यहाँ मोस्ट टिपिकल वैल्यू अगर आप नोट करें तो जीरोस जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहे थे, और उसके अलावा बाकी सारी ऑब्जर्वेशन ओनली वन वन टाइम रिपीट हो रही है। हमने देखा जो स्टेम नंबर 21 है उसमें 8 है सिर्फ जो ट्वाइस रिपीट हो रहा था, और सिमिलरली स्टेम नंबर 20 में भी 8 ट्वाइस रिपीट हो रहा है। बाकी कोई भी ऑब्जर्वेशन इतनी इतनी फेमस नहीं है, लेकिन बास डाटा सेट में ये होता है कि हमारे पास रिपीटेड ऑब्जर्वेशन सेवरल होती हैं, तो उस केस में हम अपनी जो टिपिकल ऑब्जर्वेशन है उनको जब आइडेंटिफाई करते हैं, यानी यहाँ इस केस में हमने कहा कि 210 जो है वो हमारे पास मोस्ट frequently observed कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है among the patients at hand। तो हमारे पास ये जो है टिपिकल ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अगर इस केस में, अब समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर समझ में आ जाए तो देखिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल 212 भी जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा होता, और बहुत सारे पेशेंट्स का 213 कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आ रहा होता, तो फिर हम कह देते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट अबाउट 210 से 213 कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो कॉमनली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में पाए जा रहे हैं, और वहां पर जो है इसका स्प्रेड जो है वो हमारे पास 210 से लेकर 213 तक आ रहा होता। लेकिन चूंकि ऐसा इस केस में नहीं है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है, तो हमारे पास इसका स्प्रेड जो है, जो मोस्ट टिपिकल वैल्यू है वो 210 है, और उसका स्प्रेड भी जो है वो जस्ट दैट सिंगल ऑब्जर्वेशन पे ही आ रहा है। सो जो हम इसके बारे में स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन ये कि हम आमतौर पर इस फिगर से क्या देखना चाहते हैं, तो हम ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो उनसे देख सकते हैं। You can build up a story with telling or identifying lesser points or more points to it, added to it as well. But these are 4-5 points that can be viewed very clearly from any stem and leaf chart. So we look at this chart, we identified the most typical value is the 210 cholesterol level among the high cholesterol patients, and we can see that this is the only value which was most commonly being seen or most typically being seen for this sample set. And then there is only one peak observation or one peak located at the 210 to 219 cholesterol range जो हमें नजर आ रहा था। There are no gaps in it, there are no outlying observations in it। ठीक हो गई बात। अब जो हमने यहाँ फिगर बी में सीखने की कोशिश की हुई है, लेट्स क्विकली फिनिश इट ऑफ, दैट वी हैव नोटेड कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा सा डाटा हो या बहुत ज्यादा डाटा आ जाए तो रो बहुत एक्सटेंडेड बन जाती हैं, या स्टेम एंड लीफ में लीव्स बहुत एक्सटेंडेड हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, इनको कट कर सकते हैं, और हम फिर स्टेम को 2 रोज में स्प्लिट कर देते हैं, सच दैट कि हमारे पास जो है वो जो स्टेम लीफ के पार्ट में जब 0 से लेकर 4 तक की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, सॉरी 0 से लेकर 4 तक की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो हम रिपोर्ट कर देते हैं इस वाले पहले वाले स्टेम के पार्ट में, और 5 से लेकर 9 तक की जो है वो जो स्टेम का लेसर लोअर पार्ट है उसमें स्प्लिट कर देते हैं। यानी
इन केस वी हैव अ लार्ज डाटा सेट, तो हमारे पास जो हर स्टेम है उसको हम 2 लेवल में स्प्लिट कर सकते हैं, सच दैट कि हम फर्स्ट वाले पार्ट पे 0 से लेके 4 तक की इस लीफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और 5 से लेकर 9 तक के पार्ट जो है उसको हम सेकेंड वाले में कर सकते हैं. सो वी कैन सी दैट 210 से 219 वाला जो पार्ट था उसको हमने 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, और जो डाटा सेट 210 से लेकर, नॉट राइटिंग ओवर हियर अगेन, 210 से लेकर 214 तक के जो हैं वो हम इस रो में सॉरी टॉप वाली रो में अरेंज करेंगे, और जो ये वाली रो है इसमें हम लिखेंगे 215 से लेकर 219 तक की. सिमिलरली इस वाले केस में जो है हमारे पास 190 से लेकर 194 तक के रिपोर्ट हो जाएंगे, और इस वाले हिस्से में 195 से 199 तक के रिपोर्ट होंगे. Am I clear to everyone? In case of large data set, the stem and leaf chart can still be usable by splitting the stem as 2 lines per stem, such that the lower part of the data for that stem is reported in the upper stem part, and higher part of the data for that stem is reported in the lower part of the stem. That is, from 0 to 4 stem part is reported in the first line per stem, and 5 to 9 leaf part are reported for the lower line of the stem. But this is something only to handle a large data set. It has nothing to do as a hard and fast rule, and may not be adopted in any case if you are not finding it suitable to be applied for your data set. So this is all about the stem and leaf chart. Any questions up till this part? So this मैम is आपने all पहले about. जी बताया हुबन. था कि ये क्वांटिटेटिव और स्मॉल डाटा के लिए यूज होता है, बट आप अभी लार्ज भी कर सकते हैं, बस स्प्लिट करके आप लार्ज कर सकते हैं, जैसे देखो आपने स्प्लिटिंग लार्ज, की है. मैं फिर एक बात बता रही हूँ कि लार्ज का मतलब ये नहीं है कि आप 200 ऑब्जर्वेशंस के लिए इसको बना सको. ठीक है, लार्ज डेटा सेट तो हम जिस डेटा सेट के ज़माने में रह रहे हैं, दैट इज़ द टाइम जहां हमारे पास डाटा पर मिनट जनरेट होता है, यानी मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स, स्पेशली ई कॉमर्स वगैरह से हमारे पास जो है, या सोशल जो आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं उनसे जो डाटा जनरेट हो रहा है वो मिलियन, इवन जेनेटिक्स वगैरह का डाटा जो है वो मिलियंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर सेकंड पर मिनट जनरेट हो रही है. सो डाटा इज द सिंस डाटा इज द न्यू ऑयल, सो ऐसे किसी डाटा सेट में जहां हमारे पास ह्यूज ऑब्जर्वेशंस आ रही हो, उनके लिए ये चार्ट बिल्कुल सूटेबल नहीं है. ठीक हो गई बात. लेकिन अगर हम 20 ऑब्जर्वेशंस, 40 ऑब्जर्वेशंस, 50 ऑब्जर्वेशंस के साथ स्टेम एंड लीफ चार्ट को ड्रॉ करना चाहें तो वन कैन गो फॉर. Nobody will ever guide you or advise you to use stem and leaf chart for observations more than 50 observations. ठीक है, सिवाय किसी academic exercise के nobody will ever ask you to draw a stem and leaf chart for any large data set. So I am still on the same point that stem and leaf chart is for the smaller data set. Even in case of smaller data set, अब smaller data set या larger data set still एक subjective सी term है. One can think of 50 observations as small, but one can say that 50 observations are too large to handle. तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही हो तो हम अपने उस समवॉट लार्ज डाटा सेट को हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हैं. बट याद रहे कि ये हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस को यूज करने के लिए चार्ट टाइप नहीं है. इस चार्ट टाइप को हम बिल्कुल भी उस तरह के डाटा के लिए यूज नहीं करते जिसमें टू मेनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हो. अच्छा जनाब, ये तो सारी की So सारी it's बातें थी हमारी. quantitative. So it is quantitative small, ऑलवेज which ऑलवेज is ऑलवेज range from. So ऑलवेज it is quantitative small, which is ranges from 0 to 50. नॉट नेसेसरी. मैं फिर कह रही हूँ कि 50 का कोई कट मार्क नहीं है. पहले ये समझ जाओ कि ये वाले जो मेथड्स होते हैं, ये मेथड्स एक गाइडेंस होती है जिनमें कुछ चीजें हम थोड़ा सा चेंज करके हो सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल एलिमेंट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ऐसे कट मार्क्स आइडेंटिफाई करते जाते हैं कि ऐसे हुआ तो बेटा ऐसे कर लो, क्लासेस में 5 से 7 बना लो, डाटा सेट 50 से छोटा हुआ तो उसको छोटा समझ लो, स्मॉल डाटा समझ लो, एंड सो ऑन. लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं ये रूल ऑफ थंब होते हैं. रूल ऑफ थंब का मतलब ये कि बास केसेस में आप ऐसा कोई आर्टिकल कल मुझे कहीं से ढूंढ के दिखा सकते हैं कि जिसमें उन्होंने शायद 200 ऑब्जर्वेशंस के लिए भी स्टेम एंड लीफ चार्ट शो कर लिया, फिर आप कहेंगे देखा मैडम तो गलत पढ़ा के गई थी. तो इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट. इट इज अबाउट दी choice of the user, but the recommended theoretical thing is that we do not use stem and leaf chart for huge variable. Yes, stem and leaf chart is always done for quantitative variables. No qualitative variable can be arranged in form of stem and leaf chart. आप qualitative को split कैसे करोगे?
ठीक है, आप जेंडर के किसको स्प्लिट करोगे, आप रिलीजन में कैसे स्प्लिट करोगे जहां कैटेगरीज हैं। सो इट इज डन फॉर क्वांटिटेटिव चार्ट, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। लेकिन स्मॉल डाटा सेट आपका 50 भी हो सकता है, आपका 25 भी हो सकता है, आप 40 के साथ भी कर 99 भी हो सकते सकता हैं, है। 100 के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर was about the distributional shapes. Whatever graphs we have plotted here, we have talked about in histogram, in polygon, and even in stem and leaf chart. We identified that the shape of the data set, this shape of the data set is labeled as the distribution of the data set, that it tells us the range of observation or the shape or behavior of observations, how they are being falling across. This data set can have many shapes. For example, on the they can be a very well behaving rectangular shape, a bell shaped curve, or they can be very extreme as the J shaped or inverted J shaped curve. In statistics, we identify these observations or these shapes in particular name for handling of advanced statistical tools. For looking at the shape of the distribution, generally we use histogram or frequency polygon. This is a graph type where the relative frequency histogram is very finely showing us a data set having a symmetric shape or a bell-shaped curve. This is the ideal shape in statistics and statistical analysis. And these are once again for household size, the shapes being drawn. Once again, relative frequency histogram has been plotted, and we can have a freehand curve plotted across on it. And this is showing me a J shape or a non-symmetric data set. ठीक है, so mainly जो data shapes हम use कर रहे होते हैं, they are the bell shaped or the symmetric shape type, uniform, J shaped, reverse J shaped. ये एक्सट्रीम शेप्स हैं दोनों की दोनों। इसके अलावा वी हैव पॉजिटिवली सिक्यूड, नेगेटिवली सिक्यूड विद अ राइट लॉन्ग टेल और लेफ्ट लॉन्ग टेल and a bimodal and U-shaped distribution. Usually when we plot the data, the shape is approximately being identified, not very truly. The bell-shaped curve and the uniform shape is the data set somewhat symmetric. That is, if we fold the data set from the center, the right and the left half of the data would almost be similar to each other. While the non-symmetric shapes include the J-shaped curve or the reverse J-shaped curve. If you draw a freehand curve over this data set, you will have in the chart C and chart D, you will have a roughly English letter J and a reverse J being formed over here. The lesser non-symmetric structure or asymmetric data set are generally identified by the right skewed or the left skewed as shown in the figure E and figure F of the data set. These are also called the right tail data, or the right skewed are also called as the positively skewed, and the left tail data or the left skewed in F graph is labeled as the negatively skewed data because it has a longer tail toward the lower observations or negative side of the number line. While the bimodal distribution is a distribution or a graph which has approximately two peaks, then it is labeled as the bimodal distribution. Then we have a U-shaped curve where if you draw a freehand curve, you can identify or have a look at a U-shaped curve आपका roughly draw हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जो मेनली हम देख रहे होते हैं ग्राफ टाइप्स जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं वो यूनी मॉडल है जहां सिर्फ एक बम्प बन रहा होता है। ओनली वन बम्प, वन पीक पॉइंट इज टर्म्ड एज यूनी मॉडल. If we have two peak points in the data set, we call it as a bimodal, and if we have many peak points in the data set, it is termed as the multimodal data set. Some symmetric graph types are the bell-shaped curve, triangular shape, and uniform. In social sciences, we usually only come across the bell-shaped curve. Not all other types are being usually being experienced in the social sciences, while in natural sciences or in biological sciences, we have the other two types as well. The most commonly viewed or experienced graphs or distribution types in social sciences are the right skewed or the left skewed tails that we focus them. This is the extreme structure. That's all for this chart type. हमारा अभी ये वाला चंक फिनिश होने लगा है 40 मिनट्स वाला. हम फिर से 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे and we'll join again for the hopefully one or two more sessions for 3-hour class. I hope this is clear for up till this point. एनी क्वेश्चंस या कोई है क्यूरी हमारी, तो वो अब जब हम दोबारा ज्वाइन करते हैं हम फिर से देख लेंगे. मैं फ्रेश लिंक भी जनरेट करने की कोशिश कर लेती हूँ, अदरवाइज हम सेम लिंक पर जो है वो 10 मिनट्स के बाद ज्वाइन करेंगे. वी विल हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक. मैम कैन वी टेक 20 मिनट्स ब्रेक? यस, जोहर नमाज पढ़ हाँ, नमाज भी पढ़ना है, अच्छा खाना ओके, शाना भी होगा, खाने की बात हम बाद तो में करते हैं. 10 सिर्फ नमाज के ब्रेक लेंगे. कर नमाज पढ़नी है मैम.
ठीक तो है, तो हम जो है 2:10 2:05 के अराउंड मिलते हैं, ठीक है, 2:05 पे चले हम ठीक। मिलेंगे तो फिर। ओके, थैंक यू। और ये रिकॉर्डिंग्स पे इंशाल्लाह अवेलेबल भी हो जाएंगे, एंड आई विल टेक अटेंडेंस एट दैट टाइम एंड थैंक यू मैम। ओके, सी यू एट दैट टाइम। और एनी स्लाइड क्वेश्चन, भी अगर कोई अपलोड क्वेश्चन, कर देंगे सॉरी स्लाइड्स के। आसिम दोबारा पूछना पड़ेगा, मुझे आपकी आवाज नहीं समझ में आई। मैं कह रहा था कि स्लाइड्स भी अपलोड कर देंगे। आपकी आवाज Actually, I कट was जाती है। asking that please upload the slide as well on LMS. यस, लास्ट लेक्चर की भी अपलोडेड है, ये भी अपलोड हो जाएंगी, लास्ट जब फिनिश होगा तो अपलोड हो जाएंगी। Any questions from the ठीक है जी, current part of the lecture? तो नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़नी है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाएगी विद द डाटा डिस्क्रिप्शंस की। ठीक है, सो अब हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने ग्राफिकल एनालिसिस देखा है वो हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अब हम न्यूमेरिकल टूल्स की तरफ मूव करेंगे, और न्यूमेरिकल टूल्स में हम बिल्कुल लेसर वाले जो फ्यू बेसिक्स हैं सिर्फ उनको देखेंगे। ठीक हो गई बात यहाँ तक की? ओके, लेट्स मीट आफ्टर दी ब्रेक। श्योर मैम, थैंक यू। Thank you जी।